Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. And as you all know, we are on alphabet L. So let's continue with that. So for today, the first idiom is lend me your ear. Lending someone your ear means to pay attention to what someone is saying. So we can say that this is basically the polite manner in which one can ask for attention. ठीक है? So we can say to ask for someone's attention in a polite manner. या फिर आप कह सकते हो pay attention. To pay attention. ठीक है? So whenever you are asking someone to pay attention to your part or to your words, या फिर you are giving speech whenever you go for we can say a speech dictation competition or somewhat competition of that sort, so then you can use this idiom. Therefore, in order to frame its sentence, we can say that we can say that please lend me your ear for a moment. I have something important भी कह सकते हैं या फिर urgent, whatever you feel like, important और urgent to discuss, या फिर tell, बताने के लिए कुछ important है या फिर कुछ urgency है, या फिर कुछ कह सकते हो कि important है. ठीक है? तो we can say that lend me your ear. We won't be using please because it is already mentioned over here in a polite manner. Therefore, lend me your ear for a moment. I have something important to discuss. So this was the first idiom. Moving on to the next idiom, we have let down. Let down का मतलब हो गया to release something. आप कह सकते हो to release, या फिर you can say fail. Whenever you fail, whenever the circumstances in the life are made as such that they force you to let down on your feet, on your knees, or whatever, so that is the basic different thing. But whenever you have certain expectations from, you can say, the result of yours or your family or from your friends, and they do not turn up, so that is also letting down. So in order to frame a sentence, what we can say is, पहले तो टू रिलीज पर ही बना देते हैं. वी कैन से दैट प्लीज लेट द लैडर डाउन सो दैट आई कैन क्लाइंब अप. थोड़ा सा लैडर को थोड़ा रिलीज कर दो ताकि मुझे ऊपर चढ़ने में ताकि मुझे चढ़ने में आसानी हो जाए. या फिर आप कह सकते हो क्या, आई फेल्ट लेट डाउन बाय माई फ्रेंड्स as they didn't support me during the difficult situation. तो ऐसे फ्रेंड्स किस काम के जो मुसीबतों में ही क्या ना करें, they do not turn up to help you out. So you can say that I fell down by my friends and they didn't support me during the difficult situation. Therefore या फिर आप लिख सकते हो by my friends lack of support. Instead of this whole sentence you can frame that by my friends lack of support. ठीक है? इतना बड़ा बनाने से अच्छा है कि यू फिनिश इट इन अ शॉर्ट टर्म, क्योंकि बहुत कुछ लिखना रहता है, एसेज भी लिखने रहते हैं, ईडियम्स के साथ साथ मीनिंग्स भी लिखे रहते हैं, और
synonyms भी होते हैं, तो all these have to be covered, तो उसके लिए small sentences could work as well. Moving on to the next idiom, we have the third one, which says let off steam. अब this idiom has to be marked important because of its meaning, which says that release extra energy by playing or by working. We can say by working, or you can say playing. तो आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज के अंदर, या फिर यू मस्ट हैव फेल्ट इट इन योर सेल्फ एज वेल, कि वेन एवर यू आर एंग्री ओवर समथिंग और वेन एवर यू हैव लॉट ऑफ aggressiveness and you cannot pour it out on someone or somebody, what you do is you go out for a walk, you give it a run, you give it a sprint, or you play aggressively. So that is what you call releasing of steam or letting off steam. अब steam का मतलब यहाँ पर होता है भाप. अब भाप कैसे बनती है? भाप is, you must have heard about the specific heat capacity of the steam, which is quite, we can say, more as compared to that of the water. So वहीं से you can relate what that since specific heat capacity of water is more, therefore it can, sorry, of steam is more, therefore it can create more of, we can say, damage to us. Therefore, what happens is, boiling water does not hurt much as compared to the hurt that is caused due to the steam. तो वहां से you can relate that letting off steam, ये तो थोड़ा scientific concept था, but letting off steam का मतलब हो गया you have extra energy. Therefore, extra energy could be related from the term that is specific heat capacity of steam and that of the water. ठीक है? So in order to frame its sentence, what we can do is we can say that playing sports helps me to let off steam. Hmm. Playing sports help me to let off let off steam. We can say after a long week, or after a struggling week, after a long week. So it is very necessary to keep yourself, we can say, updated with all the happiness and the liveliness and the cheerfulness. Until and unless your inner self will not be happy, you will not be able to grab all the important things that are happening throughout the life. See, life is balance of both the sadness and the happiness. So things are to be well balanced. And in order to balance the sadness, we have this idiom which says let off steam. So whenever you are aggressive over something, what you need to do is you just need to let off by playing. So you can play whichever game you like, and therefore you can release your extra energy in form of that game. Or what you can say is we can say that she went for a run after a went for a run to let off steam after a tough day. Sometimes some days are quite tough, therefore they put in pressure in you, and in order to release that pressure, what you can do is you can just go for a walk, you can just relax yourself. And another thing is you can make contact with the natural things, like you can splash water on your face, you can make contact with fire, you can make contact with the air, you can make contact with, we can say, the chirping of the birds if it is in the morning. And also you can make contact with the atmosphere that is around you. The peacefulness will heal you from inside, therefore it is quite necessary to release your steam or let your steam off. Moving on to the next idiom, we have the fourth one. You must have heard about it, which is let sleeping dogs lie. मतलब we can say that we should not bring we
not we can say that, not to bring old controversial topics, जो पुरानी चीजें रहती हैं उनको वहीं पर रहने दो, instead of getting the sleeping dogs lie. So what you can say is, you can say that don't let, we can say that don't bring the old arguments in this mm, in this discussion. Let the sleeping dogs lie. मतलब पुरानी बातें, पुराने मुद्दों को अगर ना उठाया जाए तो ही बेहतर है, बिकॉज द डिस्कशन विच इज गोइंग ऑन कैन ऑल्सो टर्न इन टू अ फाइट और एन आर्ग्यूमेंट और समथिंग लाइक दैट. So instead of bringing all those things, what you can say is, you can just let the sleeping dogs lie. So letting the dogs lie can turn out to be a major usable idiom nowadays, because it is a wedding session and there are few people who are prone to create scenes during the weddings. Therefore, you can use this idiom which says, let the sleeping dogs lie. Moving on to the next idiom, we have the fifth one which says, let the cat out of the bag. या फिर आप कह सकते हो spill the tea, and instead of tea you can say spill the beans. Means to reveal a secret, to reveal a secret. Whenever you tend to reveal a secret about something, it refers to let the cat out of the bag, or what you can say, spilling the tea or spill the beans. And whenever you tend to keep a secret, it means that let it under the hat, that we had discussed, I guess, few days back. So you can check out that video as well. So, in order to frame its sentence, what we can say is, we can say that I was planning the surprise party, but my sister let the cat out of the bag. ये जो रिवीलिंग अ सीक्रेट है, ये बेसिकली मिस्टेकनली हो जाता है, मिस्टेक की वजह से इट इज बेसिकली रिवील्ड. तो मिस्टेक किसने की है इधर? मिस्टेक इज डन बाय अ यंगर सिस्टर who was quite we can say who was quite talkative sort of behavior, and those people who talk a lot, who talk aloud and talk a lot, they cannot digest the secrets in their tummy. So what they do is, they basically let the cat out of the bag. So another sentence that we can frame is we can say that don't let the cat out of the bag about the gift until tomorrow. तो कल तक उस गिफ्ट के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए. अभी तक जिसको भी पता है उसको सिर्फ उतना ही पता रहना चाहिए. सो दैट मीन्स रेफरिंग टू not to reveal a secret even by a mistake, because it is a surprise gift and surprise are to be kept safe until they are revealed by the owner itself. So letting the cat out of the bag is quite most used idiom and you must have heard about it most of the time. Now moving on to the next idiom, we have the sixth one which says, let the grass grow under one's feet.
मतलब to remain idle. We can say that if you are really interested, then don't let the grass grow under your feet. Act, apply fast for the post. जब दिख रहा है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है चीज़ों के अंदर, तो बिना देरी करे, बिना खाली बैठे, व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू अप्लाई फॉर द जॉब. So this is what the sentence is saying to the idiom, which means letting the grass grow under one's feet. That means to remain idle. Or what you can say is, you can say that just giving an instruction directly, that is, don't let the grass grow under your feet, apply for a job now. मतलब खाली बैठने से अच्छा है क्या करो, you start doing a job, because if you are not studying, if you are not helping someone, if you are not doing anything throughout the day except for scrolling the screen of your mobile phone, what you can do is you can just apply for a job. Therefore it will help your family members to live a very happy life, not a very, we can say, but a manageable life. So let the grass grow under one's feet का मतलब है, if you are sitting idle, if you are still there, so what will happen? Things will start growing under your feet. That is, things means over here it referring to grass. So let the grass grow under one's feet means to sit idle. Moving on to the next idiom, we have the seventh idiom, which says like dying ducks in thunderstorm. इसका मतलब होता है डिजेक्टेड, या फिर आप कह सकते हो घबराया हुआ, एजिटेशन, to agitate over something, that is agitation. And related to this, we have another idiom which says let cat on hot tin roof. इसका भी मतलब क्या हो गया, टू एजिटेट ओवर समथिंग. ठीक है. सो या फिर आप कह सकते हो क्या, घबराहट. इन हिंदी यू कैन राइट घबराहट हो जाना किसी बात पे. तो what sentence we can frame is, we can frame a sentence which says that we can say that she's been pacing around like a cat on a hot on a hot tin roof after she heard the news. ठीक है. तो जब कोई भी खबर सुन ली, तो हाउ डिड शी स्टार्ट बिहेविंग, शी स्टार्ट रोमिंग अराउंड, घबराहट के अंदर, शी स्टार्टेड एजिटेटिंग like a cat on a hot tin roof, or you can say like dying ducks in a thunderstorm, मतलब dejected feel कर जाना बहुत ज़्यादा. So what you can do is you just mark this you just need to mark this idiom important. ठीक है. तो ये किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसके बारे में क्या लिखोगे, बस घबराहट से याद रखना कि कोई मरने की हालत में है, तो हाउ विल दे रिएक्ट. एक तो ऑलरेडी डाइंग डक्स है, ऊपर से थंडर स्टॉर्म आ गया, या फिर हॉट टिन रूफ के ऊपर कोई कैट इज रोमिंग, तो चीज़ें जो है थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर है, तो क्या हो जाएगी, आपको घबराहट हो जाएगी. ठीक है. ऐसा सीन कब क्रिएट होता है, वेन एवर यू गो फॉर एन इंटरव्यू, और इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड ही इज पुटिंग ऑन क्वेश्चन, थ्रोइंग ऑन क्वेश्चन, those questions which are difficult to answer, or those questions are being put on by the interviewer to you,
So that is how you, it shows that how will you react under that part of agitations of yours. How will you be handling the pressure that the company will be putting on its employees? Okay. So moving on to the next idiom, the eighth idiom, which says like a phoenix. Like a phoenix का मतलब हो गया to lead a new life. A new life. लीडिंग अ न्यू लाइफ और लिविंग अ न्यू लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइक अ phoenix. ठीक है. So we can say that the city rose like a phoenix after the devastating earthquake. ठीक है. So you can underline like a phoenix. तो like a phoenix का मतलब क्या हो गया? अ न्यू लाइफ की तरफ. मतलब अगर आप घर में पेंट करा देते हो तो दैट विल गिव अ न्यू लाइफ टू योर एरिया और टू योर होम. या फिर आप कह सकते हो कि जॉब लगने के बाद यू विल बी लीडिंग अ लाइफ लाइक अ फिनिक्स. अपनी जॉब आईएसएस वाली जिसके लिए तैयारी कर रहे हो. ठीक है, लाइक दैट. तो यहाँ पर लिख लो फिनिक्स. ठीक है. सो लाइक दिस यू कैन फ्रेम सो मेनी सेंटेंसेस अ न्यू लाइफ. या फिर आप कह सकते हो कि मेजरली शादी के बाद द कपल, आई एम नॉट सेइंग द वुमेन ओनली, the man and the woman tend to live like a phoenix. Like that sort, so many sentences could be framed on this. Therefore, moving on to the next idiom, we have the ninth one, which says like a shag on a rock. का मतलब हो गया completely alone. Completely alone. जब आप बिल्कुल अकेले रह जाते हो तब आप क्या यूज करोगे? like a shag on a rock. So in order to frame its sentence, we can say that after the party was over, he was standing like a shag on a rock, waiting for a ride home. पार्टी खत्म हो गई है, शादी वादी हो गई है, शादी में गए थे एंजॉय करने के लिए, अब शादी खत्म हो चुकी है, अब जाना है घर. तो घर जाने के लिए व्हाट डिड ही प्लान? ही प्लान टू बुक एन उबर. ठीक है. अब उबर उबर इज इट, हाँ, उबर ओला जो भी बुक किया. एंड बुक करने के लिए ही हैज टू वेट. सो द पीपल हु वर गोइंग, दे सॉ हिम लाइक अ शैग ऑन अ रॉक. क्योंकि भाई साहब अकेले आए थे अपने घर से, अब अकेले ही घर जाएंगे. बट सिंस ही वॉज वेटिंग फॉर समवन टू कम एंड टू पिक हिम अप सो दैट दैट बडी कैन ड्रॉप हिम टू हिज हाउस. तो बस उसी के लिए लोगों ने देखा एंड बोल दिया क्या? That after the party was over, he was standing like a shag on a rock waiting for a ride. With this, let's move on to the next idiom, which means uh, the 10th one, which means like pulling teeth. अब सोचो, आपको अपने सारे दांत निकालने खींच खींच के. will it be very will it not be very difficult for you to pull your teeth out? So वहीं से रिलेट कर लो इसके मीनिंग को, जो कहता है क्या? extremely difficult. Extremely difficult. When things become extremely difficult, तो आप क्या क्या यूज करोगे? You will be using like pulling teeth. So in order to frame a sentence, we can say that filling out this form is like pulling teeth, a tedious task. अब देखो, बहुत सारी जॉब्स के लिए यू मस्ट हैव अप्लाइड या फिर आप अप्लाई करते होंगे. तो वेन एवर यू टेंड टू फिल अ फॉर्म, तब क्या होता है कि बहुत सारी डिटेल्स मांगते हैं, ये दो ये दो ये दो. एंड दे आस्क either in jpj, they ask either in pdf form.
अब पीडीएफ भी देर आर आस्किंग, ठीक है फाइन, वी कैन कन्वर्ट देम इनटू पीडीएफ, बट देर इज सर्टेन रेंज कि उससे उस रेंज के अंदर ओनली द थिंग्स आर एक्सेप्टेबल. तो देयरफॉर इट बिकम्स डिफिकल्ट अ tedious task to fill certain form of that sort. So what you can do is you can call it like pulling a teeth. That means things that are extremely difficult to do. So for a person who was filling a form like this, found out that it was a very tedious task to fill a form like this, therefore he or she called it or compared it like pulling a like pulling teeth. ठीक है, या फिर आप कह सकते हो we can say that getting him talk about his feelings is like pulling teeth. मतलब किसी के इमोशंस को बाहर निकलवाना इज नॉट अ वेरी इजी थिंग. सो इफ समवन इज शेयरिंग हिज और हर इमोशंस विद यू, यू नीड टू कंसिडर दैट पर्सन एज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसकी लाइफ में यू आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सामने से चीज़ें आर कमिंग. सो देयरफॉर यू शुड पे अटेंशन, या फिर आपको आप कह सकते हो कि यू शुड हियर टू देम. ठीक है, तो थिंग्स वर्क लाइक दैट ओनली. सो this is called pulling a teeth. ठीक है, moving on to the next idiom we have, यहीं पर लिख देते हैं the 11th one which says lily livered. जिसके अंदर बिल्कुल दम ना हो, that is not brave, we can say coward. not brave लिख लो या coward लिख लो, कुछ भी लिख लो. ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, lily livered and mark this as important. ठीक है, तो इसी के लिए अगर सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए आ जाए तो we can say that we can say that the retreated from battlefield. जो लिली लिवर्ड होते हैं, लिली इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर, और लिवर्ड अब रिलेटेड टू समवॉट, इट इज एन ऑर्गन इन आवर बॉडी, सो इट मस्ट बी रिलेटेड टू द, we can say the strength, therefore we are saying what, lily livered, that means someone who is not brave, या फिर आप लिख सकते हो coward, someone who is coward or not brave, therefore lily livered, लिली लिवर्ड नाइट रिट्रीटेड फ्रॉम द बैटल फील्ड, क्योंकि ब्रेव नहीं था तो वापस आना ही था, तो इस वजह से वी आर सेइंग लिली लिवर्ड मीन्स नॉट ब्रेव. सो मार्क दिस एज एन इम्पॉर्टेंट idiom. Moving on to the next idiom, we have the 12th one which says lion's mouth. शेर के मुंह से बाहर आना, शेर के मुंह से तो कौन ही बाहर आता है. ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट, एक्चुअली डिफिकल्ट तो नहीं सिचुएशन हुई, इसको बोलो डेंजरस. जब भी किसी डेंजरस सिचुएशन में फंस जाओ तो क्या बोलते हैं, शेर के मुंह से बाहर आना. ठीक है, तो या फिर आप कह सकते हो बाय स्पीकिंग अगेंस्ट पावरफुल कॉर्पोरेशन शी इज putting her head into lion's mouth. अब आप किसी कंपनी के अगेंस्ट, वो भी कैसी कंपनी है, पावरफुल कंपनी के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे तो क्या कंपनी चुप बैठ जाएगी. अभी इतने सारे कह सकते कंट्रोवर्शियल सीन्स हुए थे, बहुत सारे लोगों के बारे में हुए थे, तो दे केम अप, दे एक्चुअली द नॉर्मल पीपल केम, दे स्पोक अबाउट समथिंग, कह सकते हैं एयर इंडिया के अगेंस्ट कुछ बोल दिया है, या फिर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के अगेंस्ट कुछ बोल दिया है. उस टाइम तक दो सीन्स वर कमिंग, बट नाउ द सीन्स आर नॉट कमिंग, द वीडियोज आर नॉट कमिंग. वाई? बिकॉज द पावरफुल कॉर्पोरेशन इट इज, एंड सिंस इट होल्ड सम पावर, तो मुंह बंद करवाने की तो शक्ति रखती है. ठीक है, तो सिमिलर इज द केस कि अगर आप किसी के अगेंस्ट जा करके कुछ भी बोलने का प्रयास करते हो तो दैट इज व्हाट, पुटिंग योर हेड इनटू लायंस माउथ. ठीक है, तो जो भी बोलो हमेशा
सोच समझ के बोलना चाहिए. Now, the 13th idiom which says live from hand to mouth. मतलब spend daily earnings daily. जितना आपने कमाया उतना यू आर वी कैन से स्पेंडिंग, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पेंडिंग डेली अर्निंग्स डेली. या फिर इसको थोड़े और अच्छे तरीके से लिखे तो वी कैन से दैट कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग कर सकते हैं, कंज्यूमिंग डेली अर्निंग्स डेली. ठीक है. सो नाउ इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट ये तो हर दूसरे इंसान की कहानी है. तो मैनी पीपल इन सिटी live from hand to mouth, struggling to earn basic necessities. ठीक है. तो हर दूसरे इंसान की कहानी, अब क्या ही इस कहानी को दोहराएं या बताएं या इसके बारे में चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर गवर्नमेंट को बताएं, पॉलिटिशियंस को बताएं, कुछ फायदा नहीं हो ना. आपको अपना खुद कमाना पड़ेगा और जितना आप कमा रहे हो, तो बस वही चीजें लिखी हुई हैं. क्या? लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब जितना हाथ में आ रहा है उतना आपने सीधा कंज्यूम कर लिया. सपोज करो बहुत बड़ी फैमिली है, अर्निंग मेंबर इज वन, और वो अर्निंग मेंबर भी इतना अर्न नहीं कर रहे कि लाखों करोड़ों में हिज सैलरी इज, ही इज अर्निंग अ बिट. और जितना ही आता है कि आज ट्यूशन की फी देनी है, आज यहाँ की फी देनी है, आज ये करना है, आज वो करना है, एंड थिंग्स आर गोइंग लाइक दैट ओनली. तो उसी को बोलेंगे क्या? living from hand to mouth. So, this was all for today. We shall meet you tomorrow. And till then, stay blessed and stay connected. Thank you for watching my video.